right, getting you the breaking news amid the Marathi language row. Former Marine Commando Praveen Kumar Teotia, who led the team during the counter-terrorist operations after the 26/11 attack at Mumbai's Taj Hotel, has now lambasted MNS and Thackeray's while asking where were they when the 26/11 terrorist attack happened. In fact, he's also said that so-called warriors hid and could not be found anywhere during the 26/11 terror attack. Listen in to what he said. जैसे ही 26/11 हुआ और टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके सारे के सारे सो कॉल्ड वॉरियर कार्यकर्ता जो थे वो पिछवाड़े में पूंछ दबाकर दिखाई नहीं दिए, और ये भी खुद दिखाई नहीं दिया, उद्धव ठाकरे दिखाई नहीं दिया, उसकी पूरी फैमिली दिखाई नहीं दी। और जो फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में मैं वहां पर रहा, ताज में मैंने जाके पूरा मोर्चा संभाला, टेररिस्ट का सामना किया। मैं खुद यूपी से हूं और चौधरी साहब के गांव से हूं, 5वें प्रधानमंत्री जो रहे वो मेरे गांव से हैं, उसी गोत्र से मैं हूं। तो राजनीति हमको मत सिखाओ, राजनीति को बिल्कुल अलग रखो और भाषा को बिल्कुल अलग रखो। हमें भी प्राउड फील होता है, मराठी एक भाषा है, हमें खुद उसके ऊपर प्राउड है, बट उसका राजनीतिकरण ना करें। All right, let me go across to my colleague Rucha, who's joining us on the phone line at the moment. Rucha, you know, somebody who led the operations during the 26/11 terror attack, now giving a response, giving a befitting reply to MNS and the Thackeray's, saying, where were you when the 26/11 attack was happening? Now that you're making such statements, perhaps a little introspection would help the MNS. Raj Thackeray, since day one, since he formed the Maharashtra Navnirman Sena, has been vocal against the North Indians and have always counted them as outsiders. Now, when there's war on language grounds where North Indians are criticized for not speaking in Marathi, a lot of North Indians are coming in support in favor of those who are being criticized, and one of them is the ex-Marine Commando Praveen Kumar, who is now saying that at the time of the terrorist attack in 2008, there was nobody from Maharashtra Navnirman Sena to save anybody. Raj Thackeray and Uddhav Thackeray themselves they were hiding at that point, and nobody came to rescue anyone. Now he's saying that because Maharashtra Navnirman Sena always portrays itself as the most available party workers on field, and since Raj Thackeray has also said that we have the support from the streets, they claim that they are always available for the local issues. And while there was an attack on Right, Rucha. Right, Rucha, you know, let's also listen in to what Praveen Kumar Teotia has said for the MNS. जैसे ही 26/11 हुआ और टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके सारे के सारे सो कॉल्ड वॉरियर कार्यकर्ता जो थे वो पिछवाड़े में पूंछ दबाकर दिखाई नहीं दिए, और ये भी खुद दिखाई नहीं दिया, उद्धव ठाकरे दिखाई नहीं दिया, उसकी पूरी फैमिली दिखाई नहीं दी। और जो फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में मैं वहां पर रहा, ताज में मैंने जाके पूरा मोर्चा संभाला, टेररिस्ट का सामना किया। मैं खुद यूपी से हूं और चौधरी साहब के गांव से हूं, 5वें प्रधानमंत्री जो रहे वो मेरे गांव से हैं, उसी गोत्र से मैं हूं। तो राजनीति हमको मत सिखाओ, राजनीति को बिल्कुल अलग रखो और भाषा को बिल्कुल अलग रखो। हमें भी प्राउड फील होता है, मराठी एक भाषा है, हमें खुद उसके ऊपर प्राउड है, बट उसका राजनीतिकरण ना करें। All right, with that, it's time for a short break. News and updates will continue.